आता लाईव्ह होते पण आतापासूनच होते नाही तर मग ती लिंक चेंज होईल. हा ठीक आहे ना. इथे पॉज नाहीये मी तेच बघते इकडे त्याला पॉज करा. पॉज होते ना. मीटिंग पॉज होते युट्यूबचं स्ट्रीम पॉज नाही होते स्टॉपच होते डायरेक्ट. स्टॉप होणार. चालले ते सेमच आहे का नाही ना मी चेंज झालं. माझ्याकडूनच जात आहे मेल. नहीं वो लिंक भेजने के लिए ते लिंक मॅडमला पाठवते ना त्याच्या पण तेच म्हटलं मेल बघून करतात. नाही मी व्हॉट्सअपवर पाठवते मी IT ला मेल करते तिकडनं त्यांना व्हॉट्सअपला पाठवते पण ही मेल मला संबंधिकडून येते. शेअर करायला आधी लोक ट्राय करून कोणता वो डिस्प्ले पे डाल के अरे स्टॉप केला आणि परत स्टार्ट केला की ते लिंक चेंज होते ना. जेव्हा मग तेव्हा करता येईल मग परत. हॅलो हॅलो मेसेज हाँ कौन सी राधिका हाँ तो कौन देख हेलो नहीं सर तू काम करेगा छुट्टी दी क्या फिर कैसे अभी इधर उधर के बाद छुट्टी है ना ज्वाइन कर मेरा एक्स्ट्रा दिन का क्योंकि जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं ना बाहर से ये हाँ देखो तो भी डायरेक्ट उधर ही जान उधर से लोग बाहर भी जा रहे हैं लेट भी आ रहे coming front this side. हेलो हाँ मैम ने बोला ना उसके लिए कॉल लेकिन मैं नहीं है ना चलेगा मैं इसका रिकॉर्डिंग से भेज देती हूँ. हाँ नहीं ये शूट ना
एक बार करना और चेक करना कि हाँ देख ले अभी तो लैपटॉप कैसे करेंगे फिर डबल काम करेंगे हेलो मेल उनको कैसे करेंगे उधर चेक करना कभी दूसरे का सेशन में अपने को इसके लिए सेटअप के लिए बाहर में कुछ ये फिर मैं देखा जाएगा ये लग गया ये वाला है पेल चालू है ना इधर हाँ यही उधर है वो फिर वो केवल छोटा ये नहीं चाहिए रे ये क्योंकि नहीं माइक पे है क्या नहीं साउंड का है उनका कोई all of you and the patients are okay you see the bless my name I guess
Hello. Hello. सर माइक बंद नहीं होना चाहिए मेरे टाइम डबल 477 7285 73713 713175 713175 Hello. Hello. वहाँ नहीं दे रहे थे वो जो माइक है ये वाइट
I also welcome our very own director, Dr. Usha Mukundan. I welcome our principal sir, Dr. Himanshu Davda. I welcome all the teachers from IT, CS and data science departments and all the PG students from each department. Before we start the session, I would like to invite our faculty, Mrs. Poonam Sindhu, to introduce our today's guest speaker for today's session. Yes, ma'am. It's been right. Sorry, felicitate that before. Invite him on the dais and then introduce. First, good morning, very good morning to everyone. I'll call Dr. Usha Mukundan ma'am to felicitate our guest today.
Yes, a very happy and great morning to everyone present here. I, Poonam Sindhu from Department of Information Technology, RJ College, welcomes you all for today's Tech Talk session, which is organized by IQSC, cell of RJ College, along with in association with IT department. This is specially designed and conducted for the students of PG, our PG students from DSAI, Computer Science and IT. Today, I take this opportunity to introduce our eminent speaker, Mr. Mukund R. Pandey, who is currently holding a position of Managing Director at Cisco Enterprise Business India. At his current role, Mr. Mukund is responsible for strategy planning, sales, and driving business outcomes for many of Cisco top clients in India. Sir leads a high-performance sales team that represents the wide product portfolio ranging from networking, data center, collaboration suite, security platforms, and full-stack observability. Prior to this, Mr. Mukund was in the role of Vice President at IBM. In his more than 2 years of valuable association with IBM, he held various key leadership roles across services and technology product businesses. Sir worked closely with telecom, industrial and enterprise segments also. During his tenure at IBM, he built a remarkable track record of helping clients transform their business through leadership and technology. Before joining IBM, Sir had brief stint at Tata Motors and Wipro Infotech also. Mr. Mukund has been a great leader and a firm believer that transparency, trust, and continuous learning approach are the heart of any successful leader. Apart from that, Mr. Mukund is a passionate long-distance runner, and he has participated in many marathons and ultra-marathons. His most special run was the Ladakh full marathon in 2017, which is the highest altitude marathon in India, in the world in fact. And not the least, but Mr. Mukund is the alumnus of SP Jain Institute of Management and Research. I welcome you, sir. It's a privilege to have you here with us today morning. I call Ms. Sujata. Proceed further. Thank you, Poonam ma'am. Now I would like to request our director, Dr. Usha Mukundan, to address our gathering. Good morning, everyone. Highly respected Mr. Mukund Pandey, welcome home. The biodata said alumnus of SP Jain, but first step is school. She has studied from Indian high school. And really, I'm getting goosebumps. National education policy believes in imparting education at the pre-primary level in mother tongue. But this Hindi high school, way back in 1938, established by a postman, by collecting munificent amount, foreigners and internals, had this vision. He had this vision of a great institution. So it is the later generations or younger generations who eat the delicious fruit. But sowing the right seed is very important. So Mr. Mukund Pandey, we are highly privileged, delighted and very, very proud. हिंदी में कहें, हमारा सबका सीना आज बहुत चौड़ा हो गया है, क्योंकि लोग कहते हैं अगर आप वर्नाकुलर मीडियम से हैं तो पहला कॉम्प्लेक्स बच्चों को वहीं आ जाता है. सोचते आप क्या करें, हम लोग बहुत सारी इंग्लिश तो बोल नहीं सकते, तुरंत कहेंगे हम हिंदी मीडियम से पढ़ के आए, हमको ये नहीं आ रहा है. बट मुझे लगता है आप सबके लिए मिसाल है. You have broken all the barriers. You have proved, and for that we pay our respect and regards to your father. To ensure that all 5 brothers study in this premises,
the premier institute for imparting education, quality education in the national language, Rashtriya Bhasha, Hindi. Our very humble, humane principal, my very own student, Dr. Himanshu Dada, great privilege to share the dais with him. Thank you very much for giving me this opportunity. And our institution, the USP, is excellent faculty. Whether it is data science, newcomer who has just joined a couple of months back, or it is a IT department or a very old department that is computer science. So all of them have been with us in the journey to ensure for us there is only one desire, one mantra to give the best to our students. And that is how students come to our premises, and they are very sure that once they join Juniorwala College, they will definitely be successful, they'll be very happy, and their future will be brightly colored. Having said that, I'll just go back about 1989, when a young person with lot of dreams succeeded the 10th standard from Hindi high school, studied in Hindi medium, pursued basic science. He did his graduation, post-graduation in chemistry. But even at that time, he was selected. When he was doing his master's in University of Mumbai, he was selected to do a management training program in telco. And when we were briefly discussing with him, he said that was a turning point in his life. Turning point not only because corporate gives you a lot of money, but the corporate culture is very different, very, very different than what you have in any institution or in any other organization. There is competition. At every step, you have to prove yourself. And just by making good presentations or giving a long talk doesn't work. You have to prove that indeed you are the best. Sir, you have made your alma mater very proud. Today, when he was taking pictures, then he was saying, oh, we had the rifle club here. He was part of the NCC cadet. That brings discipline. So holistic development is equally important. Then his brothers who studied here, their names are etched on our merit list in Hindi high school. So that is another memory or remembrances that he has. He took pictures there. And he was very happy because tomorrow he is going to come back again here to be amongst his own classmates or batch from 82 to 92, that is one decade. But sir, you are welcome every day, whenever you get time, because Juniorwala College is one step outside Ghatkopar station. And I'm very sure all our young students have their dreams and they are dreaming with their eyes open. So with this, I extend a very, very warm welcome to you. In fact, his younger brother, zoology student, was very favorite student of mine. And again, he is very successful. And whenever he needs anything, just one phone call away, we are there for him. Thank you so much for accepting our invitation. I know how it is. You're a very busy person. I'm very sure you'll also look at his LinkedIn profile, what type of contributions he's making, and he's a lifelong learner. So I take this opportunity also to welcome all the PG students of IT, computer science, and data science. Wish you good luck. Try to get the best. Don't just come to the class and try to run away, but take part in different activities, interact with students, develop a multidisciplinary approach, and I'm sure you'll all be very successful. So thank you very much for this opportunity. And once again, I extend a very, very warm welcome to you. And thank you for coming here and gracing this occasion. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Now it is my privilege to invite our today's guest speaker to start the today's session, as our students and all we teachers are eagerly waiting
for your valuable insights. And I am very much sure that students today, they are going to definitely take some insights from you and they will be applying to their studies, to their life. I would like to invite you, sir. So please. Good morning. Hello, am I audible? Vijay. So thank you, ma'am, for having me here. Thank you, sir. Thanks for this opportunity. Madam, first of all, you can always call me Mukund. Please don't call me sir, and all of you, right? It looks burden, when you call me sir. So please don't do that. Mukund is more than enough. So, well, my introduction happened and they shared with you, but I think today's session, this session is all about you, not about me. तो जैसा कि मैडम ने कहा कि हिंदी हाई स्कूल, मैं भी काफी दिन बाद में आया यहाँ पे, तो काफी वैसे 4-5 साल पहले भी आया था एक बार यहाँ पे, कोई मैरिज थी उसमें आया था। तो यहाँ काफी तरक्की हो गई है, काफी नए बिल्डिंग बन गए एज कम्पेयर टू आवर टाइम। क्योंकि हमारे टाइम पे ये कॉलेज और स्कूल के बीच में एक वॉल होती थी, उसमें एक छोटा सा दरवाजा था, बट कुछ लोग दरवाजा यूज करते थे, कुछ लोग वॉल यूज करते थे। तो काफी तरक्की हुई है स्कूल की, काफी अच्छा लगता है। कुछ बैचमेट्स हैं जो अभी भी हैं टच में, कई लोग नहीं भी हैं टच में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब देखा लास्ट वीक की देयर इज अ रियूनियन टुमारो, तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि चलो देखते हैं कितने लोग मिलते हैं। तो कल फिर यहाँ पे आना होगा इसी टाइम पे करीब। बट टू कम बैक टू दिस सेशन, as she said that we have had some, how many of you have studied in India school? Not too many. Okay. But India school काफी अच्छी मेमोरीज हैं उस टाइम की। और नॉट जस्ट मी बट सब लोग, जैसे मैडम ने कहा कि इनफैक्ट माय एल्डेस्ट ब्रदर इज अ सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट इन दिल्ली, younger one is in the US, he is working for VMware। अब आप लोग कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो VMware का नाम सुना होगा आप लोगों ने। So he is a chief technology officer in San Francisco। So and other brothers she spoke about, he is teaching all 12th standard students for NEET practice, and so he is a professor। So all of us, हम सब लोग मुलुंड से घाटकोपर पर आते थे पढ़ने के लिए। उस समय 7 years 8 years के एज में, 10 years के एज में इतना दूर जाना नॉर्मल नहीं होता था। अभी भी आजकल शायद नहीं है इतना दूर आना, बट पिताजी चाहते थे कि हम लोग सब पढ़े हिंदी मीडियम। तो वी हैड वेरी ग्रेट मेमोरीज, एंड हम सभी के लोगों ने एनसीसी भी लिया था। जैसा कि मैडम ने कहा, जो टीचर्स थे वो बहुत अच्छे टीचर्स थे। अभी भी सबके नाम याद है मुझे, मेजॉरिटी के नाम याद है। अनफॉर्चुनेटली उसमें से कई लोग अब नहीं हैं, बट उन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन किया, जो फाउंडेशन बनाया, वो बहुत बहुत सॉलिड था। उसी तरीके से आई एम श्योर झुंझुनवाला कॉलेज में भी काफी फैकल्टी थे जिन्होंने यहाँ की फाउंडेशन बनाई, जिसके ऊपर अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो। तो मैं ज्यादा आप लोग के टॉपिक के बारे में तो नहीं बोल सकता, क्योंकि आप लोग ज्यादा डीप पढ़ाई कर रहे हो, और मेरा बैकग्राउंड ज्यादा मार्केटिंग का था। तो बट आप लोग जो पढ़ रहे हो उसको हम लोग यूज करते हैं, उसका यूज करके जो हमारे जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उससे फिर हम कैसे क्लाइंट्स को उनके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, वो सब काम काफी किया है मैंने। तो उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। बाकी आई विल लीव इट ओपन फॉर मोर Q&A। आप लोगों में जो क्वेश्चंस हो गए आप मुझसे पूछ सकते हो, तो जितना का आंसर मैं दे सकूंगा दूंगा, और जो नहीं दूंगा वो मैं आप लोग को बाद में ईमेल या वगैरह से पता करके बता सकता हूँ, या लिंक्डइन पे आई एम देयर, सो एनी वन ऑफ यू कैन कनेक्ट मी विद ऑन लिंक्डइन, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मैडम ने कहा टर्निंग पॉइंट, तो मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट जो है इस समय वो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप लोग जिस एनवायरनमेंट में अभी पढ़ाई कर रहे हो, और इंडियन गवर्नमेंट ने जितना सपोर्ट दिया है स्टार्टअप कल्चर के लिए, उसमें आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी इस समय ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए था, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत
बहुत कंडीसिव एनवायरनमेंट है इस समय, और इस एनवायरनमेंट में आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ। सो यस, आई नो आप लोग में से कई लोगों की कुछ प्रेशर भी होंगे कि इमीडिएटली एक जॉब करना है, बट वो जॉब करते हुए भी आज के तारीख में इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं कि आप लोग कुछ ना कुछ आइडिया लेके, कुछ फ्रेंड्स मिलके कुछ नया कर सकते हो। और उसको पूरी, पहले एक जमाने में होता था जो भी ऐसा सोचता था उसको बहुत तकलीफ आती थी, सेटअप करने में भी बहुत तकलीफ आती थी, एग्जीक्यूट करना तो बात की बात। आजकल सब कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, उन लोग सब लोग बहुत एनकरेज करते हैं। आई एम श्योर शायद आपके साथ यहाँ पे भी कुछ कोलैबोरेशन होता होगा उनके साथ में, कुछ फ्री क्रेडिट्स होते होंगे जिसमें आप क्लाउड में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एनालिटिक्स में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। मुझे लगता है उसमें आप लोग काफी ध्यान दें। जॉब इज गुड, जॉब विल कम, ऐसा नहीं है, बट आपका जो एज है, वो एज में आपके पास में अभी भी अगले 4-5 साल हैं जिसमें आप कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और वो एक्सपेरिमेंट, और उसका ये मत सोचो कि वो टाइम वेस्ट है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। अगर फेल हो गया ना तो भी जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे ना, उससे आपको कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद। बट एक बार आप वो रेगुलर जॉब के रूटीन में लग जाओगे तो फिर कुछ स्टार्टअप करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देन यू गेट यूज्ड टू रिदम, a salary, and then your fears will only become more. Right now you can still take it as 1 more 2 year sabbatical where you want to do something on your own, work together, create a, but solve a problem, not from the fact कि हाँ मेरे को इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। इन्वेस्टमेंट तो आ जाएंगे, बट आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, वो एक अच्छा आइडिया होना चाहिए जिससे कि लोग उस पर काम कर सकें। आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अगर आपको कन्विक्शन है तो फिर ऑब्वियसली वो आइडिया सक्सेसफुल होगी, बट वो कन्विक्शन होना चाहिए। और मेन चीज देखिए, सबका, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट फ्लेयर, डिफरेंट इंटरेस्ट, सो दोज हु हैव एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट should definitely make use of this, because Startup India program maybe there are so many benefits, so many free credit, so many incubations, and a lot of companies also do a lot of incubations, including Cisco. Like in Cisco we have Bangalore campus, we have a program called Cisco for Startups. तो उसमें कोई स्टार्टअप के पास अगर ऑफिस स्पेस भी नहीं है और उसको अगर काम करने के लिए स्पेस चाहिए तो वो भी दिया जाता है। Forget about technology help. अगर आपके पास में बैठने के लिए जगह नहीं है तो you can go and sit in those. Of course, you get first you apply for that program. Once you get done, then Cisco can provide a lot of benefits. Same way, I'm sure Microsoft does, IBM does, many other people do that. So take benefit of them. That'll be my suggestion. And while you're studying, try to do some projects which are real life projects. So वो project जब आप करोगे, कोई भी एग्जांपल, आप सपोज आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, उस समय आप कोई मोबाइल ऐप बना रहे हो, जिससे मोबाइल ऐप में आजकल नॉर्मली क्या होता है, देयर इज अ नीड, देयर इज अ ग्रुप व्हिच हैज सम नीड एंड देयर इज अ ग्रुप व्हिच हैज अ कैपेबिलिटी टू फुलफिल दैट नीड। मोस्ट ऑफ द मोबाइल ऐप्स आर ब्रिजिंग दिस गैप, राइट, एट अ हाई लेवल। अब आप अपना दिमाग लगा के सोचिए कि कहाँ पे आपको लगता है कि काफी नीड है और कहाँ पे फुलफिलमेंट है, हाउ यू कैन ब्रिज दैट गैप। That's one mobile app. Or there are so many cyber attacks happening every day. If you're of that kind of mind, security, threat, analysis, can you create an algorithm which can detect some cyber attacks? क्योंकि जब इतना साइबर अटैक हो रहा है तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। किसी, अगर आप 1000 आदमी भी लगा दोगे तो उसको डिटेक्ट करना मैन्युअली वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट काइंड ऑफ AI सिस्टम कैन यू बिल्ड which will be able to look at various data points and create a correlation pattern and some sort of a warning, alert warning, etc. बड़ा इंपॉर्टेंट फील्ड है जो बन रहा है। चैट जीपीटी आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल, बट व्हाट इज मिसिंग इज उस टूल से आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मेंटर्स के साथ कुछ आइडिया, कुछ इस पे काम करो। जितना अच्छा लाइव प्रोजेक्ट आप करोगे पढ़ाई के वक्त ना, उतना आपको प्रिपेयर्डनेस मिल जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स यू वांट टू डू और व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स यू वांट टू जॉइन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठीक है मुझे जॉब भी नहीं करना बट मैं खुद का स्टार्टअप नहीं कर सकता, बट आज की तारीख में इतने स्टार्टअप्स हैं जो कि आप पहले ज्वाइन कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगा तो आप खुद का भी स्टार्टअप कर सकते हो।
तो इस समय इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, भले आप सुन रहे होगे कि यूएस और यूरोप में थोड़ा मेल्टडाउन चल रहा है, थोड़ा शॉटडाउन चल रहा है, बट इंडिया स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट, राइट? 7% GDP growth. No other continent has this kind of growth. So आप लोग, that's why I said कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे टाइम में हो इस समय, जहाँ पे आपको tons of opportunities are lying ahead of you. But आपको सोचना है कि आपको एक्साइटमेंट किस में मिलता है, किस में आपका मन है काम करने का, where do you want to do projects, and then just go for it. और मैडम ने 3-4 बार हिंदी मीडियम कहा, हिंदी हाई स्कूल का, तो अगर आपको किसी में भी ऐसा कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अरे बट मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे थोड़ा तकलीफ होगा उसको अडेप्ट करने का, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 साल या 2 साल थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बट उसके बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि हम शायद हिंदी मीडियम में भी हमारे जो मैथ्स वगैरह थे वो शायद नहीं, बट हम लोग के मैथ्स में भी सब कुछ हिंदी में ही था, क्योंकि बाद में तो कई स्कूल्स में ये हो गया कि मैथ्स वगैरह इंग्लिश में आ गया, बाकी सब आई डोंट नो अभी आज क्या चल रहा है आजकल, बट सो आई थिंक वो सब जो जो भी थोड़ा बहुत है वो लाइफ लॉन्ग हैंडीकैप नहीं है, बट जो पॉजिटिव है उसका, जैसे कि यू नो आजकल तो गवर्नमेंट भी काफी बोल रही है कि मदर टंग में आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सीखने से थोड़ा समझना थोड़ा आसान हो जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आसान हो जाता है, समझ पढ़ना आसान हो जाता है, तो उसका आप जो हो गया सो हो गया, बट आई थिंक ऑल शुड लुक फॉरवर्ड। आईडी सिंह के जो बेटे हैं राजेंद्र सिंह, वो बड़े डॉक्टर बन के उन्होंने काफी कुछ, आप लोग नाम डेफिनेटली उनको जानते होंगे, उन्होंने कितना नाम किया, तो there are so many examples you'll find those who have studied from Hindi high school and many other Hindi medium schools who would have done lots. तो उसका ज्यादा आप लोग टेंशन मत लो, मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से पढ़ो, अच्छा प्रोजेक्ट करो, और आईटी में तो सिस्टम ही आपकी, जब आप कोई भी प्रोग्राम कंपाइल करते हो तो सिस्टम थ्रोज एरर, टिल द टाइम ऑल द एरर्स दैट योर प्रोग्राम विल नॉट रन, तो आपको ज्यादा किसी से ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन आंसर सब आपको कंप्यूटर ही दे देता है। So between you, your computer and your faculty, I think you can solve any problem. But depth you cannot compromise. जैसा कि मैडम ने कहा, जब मुझे टेलको में जॉब मिली थी तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेरे पिताजी प्रीमियर ऑटोमोबाइल में काम करते थे, तो उनको, मुझे भी ऐसा लगता था कि टेलको, आज की तारीख में टेलको को टाटा मोटर्स बोलते हैं, तो अभी जो टाटा नेक्सॉन ये सब है, वो पहले उसका नाम टेलको था, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले टाटा मोटर्स बना है। तो वहां पे जब मैं गया तो वी वर अ बैच ऑफ 60 GTOTs, तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड ऑफिसर ट्रेनिंग, वहां पे IIT REC सबके इंजीनियर्स थे वहां पे। तो मैंने पहले 3-4 महीने में देखा कि सब लोग अपने अपने बुक्स लेके पढ़ाई करना शुरू कर दिए, मुझे तो लगा कि ये तो अब करियर सेटल हो गया और ये यहीं से सब, उस समय सोचता था 30 साल पर, 96 to 98 की बात कर रहा हूँ, तो जब मैंने उनको देखा पढ़ते हुए तो मुझे लगा कि जब इन लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। आधे लोग यूएस जाना चाहते थे MS करने के लिए, आधे लोग MBA करना चाहते थे, तो उस समय फिर मैंने भी पढ़ाई शुरू की, मतलब दिन में सवेरे जाओ पढ़ाई, IMS इंस्टीट्यूट अभी भी है ना, तो वो उनके क्वेश्चन पेपर होते थे, मॉक टेस्ट, वो देते, तो वो दिए हमने। तो फिर बॉम्बे में NM और SP जैन में जब एडमिशन हुआ मेरा सेकेंड ईयर में, तो SP जैन वाज ऑब्वियसली द चॉइस, तो फिर आई क्विट टेलको एंड देन केम बैक टू स्टडीज, तो BSc MSc केमिस्ट्री फ्रॉम SP जैन। सो MBA जो 2 साल गया वो काफी इंटरेस्टिंग था, काफी कुछ सीखने मिला, तो अगर आप लोगों में से किसी को बिजनेस ब्लेंड ऑफ माइंड है तो maybe you can still pursue MBA after your graduation, but do it from good institute. That will be my recommendation. That there are thousands of institutes. If you don't do from good institutes, then good faculty, good environment, good infrastructure, good studies, exposure. Because in good institutes, you'll get students also from across India, various exposure, various companies. तो जो ग्रुप लर्निंग होती है वो काफी अच्छे क्वालिटी की होती है। तो मुझे लगता है कि मेरे पूरे करियर में अगर मैं स्कूल छोड़ दूं तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो नॉलेज गैदरिंग हुआ वो SP जैन में हुआ। वो 2 साल में इतने अलग अलग कंपनीज के लोग आए, अलग अलग कॉलेज अक्रॉस इंडिया, राइट, सो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। स्कूल टीचर से कहीं ज्यादा आप सीखते हो जब आप वो उनके साथ प्रोजेक्ट्स करते हो, लाइव प्रॉब्लम करते हो,
तो और क्या वो डाइवर्सिटी बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सो डिफरेंट पीपल कम विद डिफरेंट स्किल्स। अब जैसे पहले 6 महीने में जो कैपिटल फाइनेंस ये सब मुझे नहीं आता था बिकॉज मैं हमेशा साइंस में था, राइट। बट वो पहला 6 महीना किसी भी एमबीए इंस्टीट्यूट का इतना हेवी होता है कि मतलब इफ यू कैन गेट थ्रू दो 6 months, आई थिंक देन नेक्स्ट 1.5 year इज नॉट दैट डिफिकल्ट, क्योंकि आपको सडनली 20 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो उसमें से 10 तो आपने कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। तो वो काफी काफी एडेप्टेबिलिटी का काफी अच्छा टेस्ट था वो। तो मैं मुलुंड में ही रहता हूँ बट एसपी जैन अंधेरी में था, और मुझे याद है पहले 6 महीने में शायद 2 बार घर गया था, इतना वहां पे लोड था। तो सो बस आई थिंक मेरे हिसाब से तो वही है कि जितना डीप आप जाओगे, जितना जितना ज्यादा डीप जाओगे, अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और अगर वो करने में इंटर, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, तो दैट मीन्स डेफिनेटली ऑल आर वेरी सीरियस अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। Just pick 1 or 2 interesting topics, go deep in that, do some projects, and keep your eyes and ears open of what's happening around the world. Because काफी कुछ हो रहा है. This space is very very excited. India is a very exciting time to be in, with so many policies, so many companies supporting. I'm sure कई companies आपके कॉलेज में भी आके आपके साथ कुछ प्रोग्राम करते होंगे, कुछ टीचिंग का, कुछ प्रोजेक्ट्स का, कुछ इंटर्नशिप्स का। एक्सरसाइज ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, क्योंकि फिर यस लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, बट ये जो टाइम है ये आपका फाउंडेशन है ना, तो इसमें आप जितना अपना थॉट करके उसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सको फॉर योर जॉब और फॉर योर स्टार्टअप, बोथ दैट विल बी गुड. So my suggestion would just be go deep as much as you can, do as many projects as you can. With the team learning, the group learning, there's no substitute to that. And there's so much things available on the world, on the internet. I mean, Cisco, I don't know how many of you have heard of Cisco, but Cisco is around 40 years old company, $53 billion company. It's a world leader when it comes to networking and security. तो आई एम श्योर शायद आपके कुछ कोर्सेज भी होते होंगे, CCI, CCNP, ये सब जो कोर्सेज हैं सिस्को सर्टिफाइड. दिस इज अ बिग ब्रेक थ्रू, बिकॉज एज फार एज नेटवर्किंग, स्विचेस, राउटिंग एक्सेट्रा इज कंसर्न, अगर आप लोग को हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो सो सिस्को इज अ वर्ल्ड लीडर इन दैट विद मोर देन 80%, 70% काइंड ऑफ अ मार्केट शेयर. To make it simple, I think around 85% of internet across the globe runs on Cisco platform. So you can understand what that means. So network security, आप लोग इतने अटैक सुनते होंगे, इधर पे ये लीक हो गया, डेटा लीक हो गया, ये गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट के ऊपर अटैक कर दिया. तो आजकल तो फ्यूचर में तो वॉर भी खाली साइबर पे ही हो सकती है. यू डोंट हैव टू हैव आर्म्स एंड एम्युनिशन, यू नो. आई थिंक 1 महीने पहले आपने सुना होगा शायद, जापान पोर्ट पे रैंसमवेयर अटैक हो गया था, तो दे कुड नॉट वर्क फॉर 8 hours. जापान का पोर्ट इतना बिजी पोर्ट होता है वर्ल्ड में, वहां पे अगर 8 घंटे के लिए साइबर अटैक करके, एंड एटलीस्ट इनिशियल हाइपोथेसिस वाज इट वाज सम रशियन हैकर, वी डोंट नो व्हाट द ट्रुथ इज, बट हुएवर वाज देयर, इमेजिन कितना पावरफुल उस बंदे ने काम किया होगा कि जापान एयरपोर्ट, व्हिच जापान इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट, उनका 8 घंटे का 6 घंटे का काम रुक गया था पोर्ट पे. सो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, बट this whole thing did not require any missile. So, future, no, God knows what kind of wars will happen in future. Same way on AI. AI is a very interesting topic. Everybody wants to talk of AI, chat GPT, etc. But I still think usme abhi there are both pros and cons of what is right and what is wrong. What is dharm and what is adharm. क्योंकि उसमें भी काफी बायस आ सकते हैं ना. अगर सी एआई क्या है, आपने मशीन को सिखाया, फिर मशीन ने समझा, और फिर मशीन अपने साथ सोचने लग गई. तो वो जो सिखाना वाला पार्ट है वो सिर्फ अभी भी ह्यूमन पे ही है ना, अपने आप तो सीख नहीं रहा. तो जब आप सिखाते हो उसको और जितना डेटा देते हो, उस डेटा में भी तो काफी बायस है. अगर आप पिछले 10 साल का डेटा फीड करोगे, 30 साल का डेटा फीड करोगे, तो वो डेटा यूज करते वक्त अगर कुछ बायस उसमें गई है, तो वो बायस फिर वो कंप्यूटर भी वही समझेगा और उसी हिसाब से रिकमेंडेशन देगा ना. सो देयर आर लॉट ऑफ वर्क हैपनिंग ऑन एथिक्स ऑफ एआई. आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टडी दैट, व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड,
how AI will solve problems or create problems. We don't know. अब जैसे ये cyber attack है, hackers हैं, they will also use AI, right? So there will be security companies who will try to secure them, but there will be hacker who will try to be one step ahead of them to hack the system. And majority of them are going to use AI. So one side will use AI for good purpose, one side will use it for not so good purpose. So yeah, so there's so much, opportunities, whatever you want to do from this technology. So after my MBA, I did Wipro, which was only first 1 year. I worked in Wipro from SP Jain. That was my job placement. उसके बाद then 20 years I worked in IBM. IBM का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने शायद. It's a 112 years old company, one of the largest, biggest company in the world. Mainframe computer Z series अगर आपने कभी सुना हो तो 1960s में IBM ने लॉन्च किया था. PC IBM ने 75 में लॉन्च किया था. So उधर पे भी काफी कुछ सीखने मिला 20 साल में, different roles. So that was one. And then Cisco is relatively new. Cisco I just joined 6 months back. But even in IBM, Cisco, because we used to do large projects, Cisco was always a part of the solution and all. So this is my journey. But now I would like to stop and I would like to open it for more question and answers, because I think that is better way of learning than me telling you what I have done, etc. Because whatever I've done is all history. I think what is more important is what you want to do going ahead, and what are your thoughts. You can share some thoughts with me. Maybe I can also learn from you something for me to take away. So yeah, please go ahead. You can ask questions. Is that okay, ma'am? Yes, sure. Because we want them to speak. Yes. And preferably in Hindi. Yeah, maybe that is one area you can explore. NLP. Yeah, anybody? हाँ जी पूछिए. देखो, अगर आपका 50 साल का 40 साल का करियर है, उसमें अगर आपने 2 या 3 जॉब स्विच किए तो ठीक है, बट 40 साल में 40 जॉब इज नॉट गुड, बिकॉज इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनस्टेबिलिटी, राइट? सो जॉब अब अगर मैं अपने एसपी जैन का यूज करूं, आई पास्ड आउट इन 2000, 23 साल हो गया हमारे, और हम लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, साल में एक बार तो मिल ही लेते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप एंड गूगल एक्सेट्रा. ऑन एन एवरेज एवरीबडी इज ऑन देयर थर्ड जॉब. कुछ एक्सेप्शन होंगे जो चौथे पे होंगे, कुछ लोग होंगे मेरे जैसे जो ऑलमोस्ट 20 साल एक कंपनी में काम किए. बोथ आर आउटलायर्स, बट ऑन एन एवरेज थर्ड जॉब. So I think job change, in fact, nowadays companies also prefer if you have, because every job change means more adaptability, more challenges. Yes, you may think that you are joining a job because you're getting a salary hike, but along with that comes a lot of different culture, responsibilities, etc., where you may or may not succeed. Both is a good experience. So then when you go for a third job, you can say, boss, this is what I learned in this company, this is what I learned in this company. Ultimately, all of you should understand that, skill is the new currency. So in this IT world and non-IT world also, skill is the new currency. आप किसी भी बैंक को ले लो, सब लोग आजकल डिजिटल करना चाहते हैं. So you'll be surprised whether they are a bank or if they are fintech. Many banks say that, boss, we are not a bank, we are a technology company. अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने पूरा चेंज किया है, वी ऑल नो राइट दैट उबर डज नॉट ओन अ सिंगल कार, फेसबुक बिगेस्ट पब्लिशिंग कंपनी डू नॉट ओन अ सिंगल प्रेस, राइट? सो दिस इज हाउ मॉडल्स आर इवॉल्विंग. मेक माई ट्रिप डज नॉट ओन अ सिंगल प्लेन, बट दे सेल मैक्सिमम टिकट्स. सो दिस इज व्हाट टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, द एंटायर बिजनेस मॉडल हैज चेंज्ड. सो हर स्टेज पे एक लर्निंग है. तो मेरे ख्याल से every 3 year 4 year changing job may not be good, but because see, when you are learning, there is some time you need to learn also, right? You can't say that I'm such a great learner कि मैंने 1 साल में एक कंपनी का सब कुछ सीख लिया, अब second, third. So yeah, I think 7-8 years is a good time to learn and grow. And then if you think, I think more than switch change, I think what is more, there are 2 things. One, are you running away from your current job? Or second, are you running towards something which is more exciting? So that you have to decide.
which situation you are in. If you are running away from your job, which means maybe you are not happy with the money, or you think that whatever learning you wanted to do is over, there's no more scope to learn. But where you're going, then please make sure both these things get addressed. Otherwise, purely for money, if you're going, chances are within 1 or 2 years, you'll get fed up there as well. Because money comes maybe once in a month, right? But 30 days, 8 hours is spent on the job. If that is not exciting enough, then I think you'll get bored soon. So yes, job change is important as part of your skill augmentation. But if it is only for salary hikes every 2 years, in fact, your future employers may not consider you. That this वो CV लेवल पे ही रिजेक्ट हो जाएगा कई बार. सपोज आपने 10 साल में 6 जॉब चेंज किया है और आप 7वें के लिए अप्लाई कर रहे हो, कई जगह पे शायद आपका CV फिल्टर भी नहीं है. Means they'll feel that this person will come, maybe work here for 1 year or 2 years, and then again move on. So why should we invest in this person our time? Money is one part, time is also equally important, right? In this talent war, you also want to, when you put so much of investment on talent, you want talent also to reciprocate, right? Yeah. Yeah, please ask questions. We are not listening. So many times, these students have multiple offers Hmm. when they graduate. So it's a big question for them how to choose between suppose they are selected in Wipro and maybe TCS. So they have this big question how should it be the technology they're focusing on or salary or what should be the objective? So now here, this is a very interesting thing you said, because I will say something controversial. I don't know whether you'll accept this or not, but I want to tell you a true story. 2 times this has happened with me. She mentioned about multiple jobs. So in SP Jain, there's a day 0 company, then day 1, day 2. Day 0 companies are dream companies. And there you can only get one offer. The moment you get one offer, you are out of the placement. Fortunately or unfortunately, in my case, on day 0, since morning 9 o'clock, the process started in the campus, different rooms, different companies, वगैरह, GD, interview and all that. So unfortunately or fortunately, शाम को 6:30 बजे, exactly the name she said, one of the names and another company. I got 2 calls from at the same time. तो I think 7, 6:30 कुछ बजा था. अब वो दोनों कॉल आ गया तो इसका मतलब एक जॉब लॉस तो पक्का है. Because once they give, they will, if I refuse, they'll not give it to somebody else. Then that job loss is job loss. That is why we always avoid कि पहले कोई बता दे day 0 वाला ताकि दूसरा job loss ना हो. But वो ऐसा हुआ, timing ऐसा हो गया कि one company was Wipro, other company I don't want to name. But so then I told the placement committee that, see, anyway, one job loss is going to happen. So why don't you give me 7 days to decide which one I should take? Because one of them was obviously giving 25% lower salary than the other one. And then I spent 1 week going and meeting people in both these companies and my friends. And finally, after a week, I decided to pick the lower salary one option. Because what feedback I got from people was that this company will put more effort on your training, development, long-term career, and growth. So when at this age, and this is 2000, so imagine us samay bhi 25% was not small, no? So, but I chose that company, which gave me 25% lower package. But that company had a culture, that company had value system, that company had a career program for their employees. More focused. I'm not saying other one did not have. They also had. But between the two, this company had more, they would invest more in me. So abhi is samay to learning is more important, right? Us samay. तो आप लोग जब जाओगे तो मेरे हिसाब से जो भी कंपनी में आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है. एंड रिमेंबर, द वंस हु विल पुट सो मच ऑफ फोकस and investment on your training and learning, they'll pay less. So think of it, you should think of this much is the salary plus the learning investment. When you do A plus B, you'll find the third company which is not putting so much of effort on your training, etc. Maybe giving more money, but it's not worth it, because आपको immediate year में अगले 4-5 साल में learning is more important. What training they'll give you more. जो आपने यहाँ सीखा वो तो जरूरी है, but जो आप वहां जाके पहले 6 महीने में सीखते हो, पहले 1 साल में सीखते हो ट्रेनिंग्स में, those trainings, if you actually go and outside to buy, they'll be worth 50 lakhs, 25 lakhs.
उनके बड़े बड़े लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पे 3-3 महीने आपको सिर्फ सीखना है. This is not funny. In fact, that's why many companies ask for a bond also, no? Yes. Because they say, boss, we are going to invest so much money in you for your training, then we don't want you to go out immediately out. So between the two, no doubts, I think go for the company which will invest in you, in your training, even if salary is little less, no problem. Because see, 30 साल के career में you'll have many opportunities to jump based on your performance. But if your skill has not improved, then wherever you'll jump, you'll be going with half skill, right? So look for companies. I mean, TCS, Wipro, great companies, they invest a lot. So if you get in those companies, just make a great career out of it. And don't leave any opportunity to learn. That'll be my suggestion. Yeah. So like, what are various business strategies in the industry? Business strategies. Yeah, that what are various business strategies in this industry? Like how we can explain it? But what course you're doing? I'm pursuing the MSc IT Hmm. right now. Hmm. I'm currently working in Accenture as a quality engineer Hmm. associate. So like, as if I'm working as a quality engineering, but like if I want to explore more in different courses, different like industry and all. So how I can like explore it more? Like there are many like various technologies upcoming. So which are the like highlighting courses which we should think that we should go in that. So we should start our journey from like that. Yeah. तो सबसे पहली बात तो you should see कि जो काम आप अभी कर रहे हो, quality itself is a very big domain, you know. So if you like this, then see how are different companies looking at quality. Quality, one thing is just a code testing, but second is, you know, if a bank wants to launch a digital service, or if Indian government wants to launch Aadhaar, can you imagine 120 करोड़ लोगों को जो आधार दिया जाएगा, उसमें से उसकी सिक्योरिटी में क्या क्या लूप होल हो सकते हैं? अगर वो आपको एक्साइट करता है, वो भी क्वालिटी है ना. तो अगर आपको वो एक्साइट करता है तो आप उस तरह का कोर्स पढ़ना शुरू करें. ओपन स्टैक, इंडिया स्टैक, यू नो, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी एटसेट्रा. बट अगर आपको लगता है कि बस क्वालिटी में मेरे को मजा नहीं आ रहा, बट मुझे बिजनेस प्रोग्रामिंग करना है या मुझे किसी बिजनेस एनालिस्ट बनना है, I'm more customer facing. How do I develop a mobile app? What kind of interface you will like? Then that skill is very different from this. So what I'm saying is, first you decide what you like to do. For everything there is scope. Everything you want to do under the digital acceleration, there will be scope for everything. Let's start from the hardware layer. Enough and more networking is needed, right? Everybody wants to connect everybody. So all of you who want to build a career in networking, there is tremendous opportunity. Then comes, once you set up the network, then infrastructure comes. So hardware, software, multi-cloud, hyper-cloud. So अगर आपको वो इंटरेस्ट है कि बस मैं क्लाउड इंजीनियर बनना चाहता हूँ या मैं क्लाउड एनालिस्ट बनना चाहता हूँ, तो उसमें आप जा सकते हैं. फिर उसके ऊपर फिर आता है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन. तो अगर आपको लगता है नहीं मुझे मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लगता है, तो मैं SAP सीखूं क्या, SAP सर्टिफिकेशन करूं क्या, उस तरीके से. तो मेरे हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट है ना, बिकॉज देयर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग, बट यू शुड थिंक 5 years hence वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, 10 years hence वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ. और ये सब चीज में बेस्ट है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जो some of these companies where they work, go and spend 1 hour with them and see what work they do and see if you like doing that. अगर आपको अपॉर्चुनिटी 5 साल बाद मिल जाए या आज भी मिल जाए, तो will you like doing that? Accordingly, then you start picking up your courses. Because जो चीज में इंटरेस्ट है उसका कोर्स अगर आप लोगे तो चांसेस आर यू विल सक्सीड मच बेटर. जैसे आपको सिक्योरिटी पसंद नहीं है और अगर आप उसी में डीप कोर्स करना चाह रहे हो, तो फिर सूनर और लेटर यू विल जस्ट गेट इरिटेटेड. बट अगर आपको एनालिटिक्स पसंद है और आप उसमें कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो डेटा फील्ड इज सो बिग, एज दे से, राइट, डेटा इज द न्यू ऑयल. सो देयर वाज अ टाइम व्हेन स्टील, जमशेदजी टाटा जी के टाइम पे स्टील था, which revolutionized the world. Then crude happened, and then now we are saying data is the new oil. Every data. So if you are but if you don't like maths, there's no point liking data much.
Because yes, as an analyst, you code still, but if you want to do something in, modeling, etc., then flair for maths has to be there. So ये सब fundamental blocks है. अगर maths ही पसंद नहीं तो data analytics में ज़्यादा deep करके कोई फायदा नहीं. अगर maths पसंद है तो data is one of the most emerging field, and it will remain. Because देखो, data is a byproduct of the digital acceleration every industry is doing. Retail is doing digitization, manufacturing is doing digitization, banks are doing, e-commerce companies are doing, everybody is doing digitalization. So tons of data is getting, each one of us has this mobile phone. So much of data is getting created every day. Somebody who can analyze that pattern in data will always have one of the most lucrative in data and AI. So data and AI course, जरा भी इंटरेस्ट मैथ्स में है, आई वुड सजेस्ट उसमें और थोड़ा डेवलप करिए डेटा और स्कोप है. डूइंग योर ओन एज जॉइनिंग एनी कंपनी, डेटा इंजीनियर, डेटा विजुअलाइजेशन, ऑल दोस आर वेरी क्रीमी जॉब्स. नॉट बिकॉज, और आप ये भी सोचो कि जैसे पहले जो जिसको काफी टेकी माना जाता था ना, उसमें 70-80% काम अभी रोबोट्स और ऑटोमेशन ने निकाल दिया है. तो वो डेफिनेशन भी चेंज हो रही है ना. तो इसलिए नाउ यू हैव टू कंटिन्यू टू डू मोर वैल्यू एडिंग जॉब, विच विल बी लाइक आई सेड, स्किल इज द न्यू करेंसी. तो आप जितना वो सीखोगे, जितना वो स्किल ऑगमेंट करोगे, फिर उतना आपको अच्छा जॉब मिलेगा, या अपना खुद का स्टार्टअप करोगे. किसी को क्रिएटिव में इंटरेस्ट है तो उसको फिर डेटा एनालिटिक्स करके ज्यादा फायदा नहीं है, उसको फिर यूआई यूएक्स में जाना चाहिए मेरे हिसाब से. क्योंकि आज आप मोबाइल खोलोगे तो उसमें कम से कम नहीं तो एवरी पर्सन हैज देयर शॉप इन मोबाइल ऐप, राइट. तो कभी आप सोचते हो कि कुछ मोबाइल ऐप आपको अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते. क्यों? क्योंकि शायद उनका यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं है, उसमें मल्टीपल हॉप्स हैं, उसका विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं है. देयर इज अ प्रॉपर साइंस इन दैट. आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग सम कोर्स ऑन यूआई यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस, एटसेट्रा. So if you are creative blend of mind, digital marketing, digital ads, you can look at those parts. No point doing so much of maths and developing algorithm when maths is a problem area. But if maths is a strength area, I think there's too much to be learned in that area. Lots will come. Entire AI is based on algorithm and maths only, no? अगर maths का appreciation है तो फिर definitely data and AI can open lot of doors for you. Yeah. It will continuously evolve. जो चीज इतना समझो, जो चीज अगर आप कोई मुंडेन चीज कर रहे हो, डेली कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, क्या ये कोड आया, टेस्ट किया, भेज दिया, कोड आया, टेस्ट किया, भेज दिया, और कुछ नया सीख नहीं रहे हो, तो जो काम रिपीटेटिव है, जो काम आसान है, वो सब ऑटोमेशन में चला जाएगा. गुड प्रॉब्लम टू हैव. क्योंकि आपको भी तो कुछ चाहिए ना, कि जब मैं पहले साल में जॉब में था तो मैंने ये डेवलप किया, बट तीसरे साल में मैंने ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया, उसके बाद और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप किया. अगर आपको लगता है यही काम आप 25 साल करोगे तो वो तो आईटी फील्ड में होना ही नहीं है. Every 3 years, 2 years, some new emerging technology will come and things will change. So I think most important part will be how are you continuously learning. Some great scientists said, right, the day your learning stops, you die. Yes. So that I try to maximize my own learning with every. So follow. I'm sure if you are on LinkedIn and if you like some companies like Microsoft, like IBM, Cisco, follow their LinkedIn pages. CEOs, CFOs, they put a lot of stuff on that. How is future shaping up? How is industry shaping up? वो आप पढ़ते रहोगे ना तो मतलब not necessarily you have to read everything in books only. That LinkedIn page of Microsoft will have tons of information of what they are doing on data and AI. You don't have to pay anything for that. It's all free. Internet is all free. So much content is there. This question. तो आप पहले अपना इंटेंट बनाइए, उसके बाद में कंटेंट तो बहुत है. तो आपको जो इंटरेस्ट लगता है आप उसमें डीप करिए, and there are tons of information available. So if you're thinking that even after suppose you be a gold ranker here and you go and do your first job, and after 10 years when you look back,
you will not be doing that work anymore because that work may not be needed because some automation has taken over. वो तो आपको लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं. So as a fresher, what would be better for me to work for a startup or some company, big company like Wipro or TCS? Because often so an individual gets lost in the crowd. So as a fresher, what should I do? If you have an appreciation that you may get lost, I think that is that means you have an aspiration to be, called out or to be different from others. Purely from that statement, I would say startup, but I don't know your background. I don't know family pressure. So that's why I started by saying, if it's y'all are all 22, 23, 24s, right? So you have good 2, 3 years, 5, 4 years. And if there's no family pressure, I would suggest startup exposure will give you far more learning, because in that company where you'll go, they'll teach you one thing, but they'll expect you to be master of that. In a startup, you'll probably do 5 things. So multi-skilling, again, I'm coming back to skill. The opportunity to do multi-skilling will be far higher in a startup than this. At the same time, startup comes with its own risk. A company will say, okay, work from 9 to 5 and go home. Startup may tell you, no, work from 9 to 9. But again, look at it like this. Maybe you're working more hours, but you're learning more. So what a standard traditional company will teach somebody in 1 year, in a startup, you may learn that or more in maybe 6 months. So ye aapko ways and cons karna hai. Are you ready for that 12-hour, 13-hour work? Number 1. Number 2, are you ready to carry that risk? Third, are you okay with maybe lower salary for a few years, but then jump onto a entrepreneur yourself? And how does family? Ultimately, family is also very equally important, right? Your parents may have some expectations of you. You may have some expectations of yourself as well. So, agar aapka family condition aapko opportunity de raha hai, that you can afford to take that, I would think start. But agar ye sab pressure hai, to remember, अगर आप किसी ट्रेडिशनल कंपनी में काम करके 3 साल बाद में अगर स्टार्टअप में आना चाहोगे, वो शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट यहां से वहां जाना, दे ऑल विल गिव यू रेड कार्पेट. Assuming you have skilled enough yourself, you have learned in the process, because वो एक जो पहले था ना कि अच्छा you lost your job, so that means you must be not a great candidate. वो अब definitely industry में ज्यादा नहीं है. In fact, people look for people who have faced such adversities, failures, overcome those challenges, because look, in every business, there are a lot of disruptions. So when we are also looking at, if I have to hire somebody in my team, I'm more open today to hire somebody who's been fired than maybe I was 10 years back. Because firing does not mean you're not good. It just means that that circumstances, that company at that point in time did not have that much of role for you or sustainability of it. But if you have done good work, it will show through your work. So इसलिए मैंने बोला कि opportunities बहुत है, climate काफी change हो गया है, तो आप लोग को उसमें advantage तो रहेगी. Anything else? Please. So, being a student, I just want to understand like how should I do the sector? Meaning the banking sector, retail sector, that part, or technology? Yes, I am more interested in fintech. Fintech. Yeah. So coming from a background of where I should more focus on, whether should I get into something like a banking sector or fintech sector for the next 10 years? So first thing first, follow some fintechs on LinkedIn or internet. See the kind of work they are doing, what problem they are trying to solve. Majority of them are trying to solve a problem of making it easier for customers to take loan, to take credit, because that's where their business is, right? Disrupting the traditional model, right? But at the same time, in that fintech specifically, security is also very big, cyber. So, आप ये सोचिए कि आपका interest किस technology में ज़्यादा है? Do you want to be a cyber expert for a fintech, or you want to be a business analyst for a fintech, or third, you want to start your own fintech by solving some problem?
ये तीनों के आंसर से आई थिंक सो इफ यू स्टडी साइबर क्राइम सिक्योरिटी कोर्सेज एक्सेट्रा और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट जरा भी नहीं है देन आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट. Similarly, analytics, data, pattern, fintech is all about that. So if you have flair for data, again fintech is a right place to be. So based on what subjects excite you now, based on that I would suggest you should think of that. Still, I'm exploring some certain sectors actually. So recently, I got into a startup creation market. So I've been there for 3 months. So it was a startup. So as the my friend, before like there was a lot of layoff. So I faced that issue again. So after that, I faced that. So I just want to understand like whether I should focus on like I am interested in logistics as well because the thing is like the way the system works in USA compared to India. So as a logistics if you compare to India, so it is like so very good the new work startup. And compared to USA, it was like very lane and fixed. So they have their pattern. So I'm more interested in that. Like, and now the thing is like I'm pretty confused, like whether should I go for data analysis or supply chain like that. So Yeah, वो तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज आपका जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है उसमें जाना चाहिए मेरे हिसाब से. देखो e-commerce express is also trying to do what you're trying to do in India, right? And with 5G coming in, with SIMs coming in, M2M, यहाँ पे भी logistics के case भी काफी बढ़ेंगे and that business is also undergoing disruption. Every business you take is undergoing disruption. But purely from an outside view, if you ask me, from a market size, opportunities perspective, I would think fintech may be slightly bigger than a logistics space. But if you're too passionate about logistics, then maybe logistics. But purely looking from hedging your risk, maybe fintech. Because fintech बहुत हैं और बहुत आएंगे भी. इंश्योरेंस का भी खुला है. इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत डिसरप्शन आ रहा है. बैंकिंग छोड़ दो आप, इंश्योरेंस भी अगर आप देखोगे तो उसमें आज भी आई थिंक 85% business happens through channel. And every insurance company wants to break that. How will it happen? Only when they go direct to customers, right? For that, there'll be a lot of digital platforms that will come up. So a lot of potential for innovation there. A lot of claim settlement. एक पहले जमाने में नहीं होता कि 1 महीना लग गया claim settlement करने के लिए. आज के तो मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया, उधर से ही फोटो खींचो, ऐप पे डालो, उधर से उसका जो आएगा वो चेक करेगा सब ठीक है कि नहीं, and within 2-3 days your settlement is done. So a lot of technology they are using for every part of insurance process, whether on the customer side or on the settlement side. So there's a lot of opportunities. Last question, like which domain we should more focus in compared to like sector once we are selected sector. Once we are selected sector, which domain we should more focus in? Out of your 5 subjects that you study, which is the one where you're getting best grades? Huh? Follow that. AI and ML. Yeah. देखो बेस्ट ग्रेड आ रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो, ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, ज्यादा फोकस कर रहे हो, तो उसी पे काम करो. He is confused in whether to concentrate on the data science or whether to concentrate on AI. But do you genuinely believe these two are so different? Ultimately, data science, in my view, I'm not an expert, but data science is the mother science. All these things are offshoots. I would go maybe one step for maths. Yes, both are other concepts. So, don't get so much bogged down. क्योंकि ये कल को कुछ दूसरा आ जाएगा, है ना? Maths will not change. Maths will remain maths. So stick to logic, stick to maths. All these are manifestations will keep changing. ब्लॉकचेन आ गया, ब्लॉकचेन अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट लगता है तो वो उसका काफी पोटेंशियल है. ओपन सोर्स. सो सब जो आपको इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर ही आप प्रोजेक्ट्स करो. अभी कॉलेज में जब आप हो तब छोटा प्रोजेक्ट करो, उसमें आपको काफी लर्निंग मिलेगा. और when you're in college, you can definitely work 20 hours a day. Do some project that will determine whether which subject is of interest to you. If any subject you cannot work 20 hours a day, that will show that you're not interested in that project. But if you're liking something, you will spend 20 hours. That is also one good acid test. अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना, then you leave everything else, but just go after that. Follow that.
बिकॉज आपको 5 सब्जेक्ट में अगर आपको 6 on 10 मिला, दैट इज नॉट अ गुड स्कोर. बट अगर आपको 2 में 8 on 10 मिला और बाकी 3 में 5 on 10 मिला, आई थिंक दैट इज अ बेटर इंडिकेशन दैट ओके इन दीज टू आई वांट टू स्पेशलाइज. बिकॉज ये फील्ड ही पूरा स्पेशलाइजेशन का है, ये जनरलाइजेशन का नहीं है. सो पिक योर हॉर्सेस वेयर यू थिंक यू वांट टू गो डीप. एनी वन इज सफिशिएंट. उसके बाद में तो बाकी इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू स्टफ, न्यू टेक्नोलॉजी. One core stuff you should definitely try to master in these 2 years or 3 years course that you have. Anything else? What is the scope of IT and CS in upcoming years? IT and CS. tons of scope. There are more jobs than the skills. Yeah. Why do you think Indian government is going after skills India, skills India, skills India? Because Cisco has a program in next by 2025, Cisco is going to teach 5 lakh students, school students, on cyber security. Free. What is that indication? That the cyber security, the rate at which cyber crimes are increasing is far higher than the rate at which the skills are increasing to tackle them. So think of it like a war. We need more soldiers. So scope will always remain. अगले 10-15 साल. बट वही है, स्कोप में आप ये फिर मत सोचो कि मेरा काम डेटा एंट्री का होगा. क्या डेटा एंट्री इज डेड? या मैं छोटा सा टेस्टिंग करके अपना करियर बना लूंगा क्या? नो. थोड़ा डीप जाना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में. बिकॉज जो काम रिपीटेटिव है, जो ऑटोमेशन से हो सकता है, वो ऑटोमेशन में चला जाएगा. But will more complex job go? No, because even those automations require somebody to make those automations and continue improve on. Automation अपने आप थोड़ी बन जाता है. That is also software code only, right? Somebody has to develop it. Those kind of jobs, anything more deeper jobs will always pay you more. And these days, people sitting in Bangalore working for some small process of some global company, they are making unheard salaries. Stocks plus salary. आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना स्कोप. बट क्यों? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर छोटे से स्कोप के लिए दे आर द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड. सो आपको 10 चीज बहुत एवरेज आने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज बहुत डीप आना, वो दैट विल डिफाइन यू. 1 या 2 चीज, तो वो आप अभी डेफिनेटली तैयार करो. What think of it this way, what should I be known for? Data, UI UX, stats, maths, AI ML. वो आप सोचो कि आज से 10 साल बाद आपके प्रोफाइल में क्या लिखाना चाहिए. I am a UI UX expert, I am a data expert, I am a security expert. और फिर उसकी तैयारी आज से शुरू करो, है ना. This don't even worry about a job. वो सब आसानी से हो जाएगा. अगर आपने एक प्रोजेक्ट किसी कंपनी को बताया कि मैंने ये किया है पढ़ाई के वक्त और उसमें ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, दैट्स व्हाट दे ऑल वांट टू लिसन टू. बिकॉज सब लोग ये बोलते हैं ठीक है, आज से 10 साल पहले जब ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थे, देयर वर एक्सक्यूजेस. नाउ देयर आर नो एक्सक्यूजेस. सो दे वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी. कोई आपको बोलेगा तो आप करोगे, उसका वेट मत करो. What can you do? What is that one thing you would like to do? Talk to your faculty, talk to your friends, and say मुझे इसमें कुछ करना है, साइबर क्राइम में मुझे कुछ करना है. क्या करना है? ठीक है, एक प्रॉब्लम लो, उसके बारे में थोड़ा स्टडी करो, फिर और स्टडी करो, फिर इससे आपको धीरे धीरे करके ना अपने आप आपका स्टडी होते जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि पढ़ाई हो रही है. It's all part of solving that problem. And then you become a cyber expert. Cyber experts have, the ethical hackers, some of their salaries is much higher than what anybody would even imagine. Many people deploy them ना भाई. अगर आपको भी अटैक को डिफेंस करना है तो डिफेंस दोनों साइड सिमिलर स्किल चाहिए ना. Nothing bad in that. It's just that are you using it for the good purpose or for the bad purpose? But skill needed both sides are similar. Weak enemy, strong enemy, you need that. हाँ जी बोलिए.
I'm kind of a person which I loves to lead a person, a team, or I'm a customer. Like I love to communicate with others. Mhm. So which field should I choose, and how can I start my career in that field? But do you have appreciation for technology? Do you like coding? Do you like creating programs, mobile apps? Yeah, I can code a little bit. Like I have an interest, but not that much as per. I would think that maybe you want to go for, say, some courses on digital marketing, etc., which will help you be more on the client service side, something like that. How can I start my career? I'm sure there are courses on digital marketing, etc., right? Because digital marketing का जो भी काम होगा, there'll be market facing, customer facing. So when you have those courses and when you go to a company and say, boss, मैंने digital marketing के ये 3 certification किए हैं, मुझे client side अच्छा लगता है, तो आपको फिर वो see like every bank has digital banking teams. You can be part of that if you want. But उसमें फिर UI UX skills ये सब थोड़ा आपको develop करना पड़ेगा. और retailers और e-commerce अभी जैसे Amazon है. Amazon has a huge team, right? Digital marketing में. So you can be part of that. And team lead वगैरह day 1 में नहीं मिलेगा. पहले आपको वो leadership quality भी इधर दिखानी पड़ेगी. फिर आपका जब results आएगा, success आएगा, तो फिर in few years you'll get an opportunity to lead a team as well. But team lead that requires very different skills, जो कि आपको धीरे-धीरे job में समझ में आएगा. So I don't think day 1 anybody will land you a team lead job. First you have to show your own self leadership before you become team leadership. So आप पहले वो काम करिए. हाँ, अभी तक आपने जो बताया उससे लगता है कि शायद आपको बैक एंड में बैठ के या कोई प्रोग्राम डेवलप करने में और बड़ी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टीम या डिप्लॉयमेंट में डिलीवरी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. You want to be on more of marketing side. So yeah, majority of the retailers, e-commerce, all of them today have a digital marketing department. You can be part of that, or join some of these companies and like a Wipro, TCS, Infosys, and then say I want to be on the sales side. So he starts with business analyst, and then you can move to sales as well, or do an MBA. So think of doing an MBA from a reputed institute and either marketing or digital marketing, and then वहाँ पे the campus में then you'll have tons of options. Yeah, I think MBA may be a better choice. अभी कर सकते हो, अभी you are young, you can spend time to study more, so you should do that. Okay. Yes. Yes, sir. So, Acha, by the way, I am on LinkedIn. So if anybody has felt shy to ask me any question, you can still reach out to me on LinkedIn and ask me anything. Okay. But मुझे काफी अच्छा लगा. Thank you for your time. काफी पुरानी यादें भी ताजा हुई. So, अगर if I can be of any help, let me know. And thank you for your time. Good day, good week. See you. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your valuable knowledge and answering all the questions patiently. Now I request our principal, sir, Dr. Himanshu Davra, to address the gathering. Good morning, everyone. And I'm here to propose a vote of thanks for the excellent 1 hour that we all witnessed in this auditorium. Respected Mukund sir, sir, you are special to us because you are a student of Hindi High School. But I think today there are many special things that have happened in this 1 hour. A guest for whom a LinkedIn profile as introduction is given, and then an introduction is given by someone straight from the heart. That is very special for us. Second, sir's brother, Bhushan sir, is a very good friend of ours. So when sir started the session, I clicked the photo and sent it to Bhushan sir and said, "Aap inko pehchante ho?" So he said, "हाँ sir, ये मेरे छोटे भाई हैं." मैंने बोला, "ठीक है, वो हमें पता है, हम अभी सुन रहे हैं." तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, "ढांसू है." मैंने बोला, "हाँ सर, एकदम ढांसू." तीसरी बात, सेशन शुरू होने के पहले हमने सर से पूछा, "आपका कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है?" तो उन्होंने बोला, "नहीं, मैं यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन लेकर नहीं आया हूँ." तभी मुझे एक बात याद आ गई, किसी ने कहा था
यदि आपके पास पॉइंट्स हैं और अगर उसमें पावर है तो आपको पावर पॉइंट की कोई जरूरत नहीं। और सर ने ये साबित कर दिया। It was a beautiful address. The way he connected to you also says that apart from the fields that he has ventured into, he should have also gone into a teaching. I'm sure he would have been the best teacher in whichever organization that he joins. Skill is a new currency, a beautiful statement that I take home today. He also said data is a new oil, which is also something which I'll always remember. But what I gather from the entire talk that he had with you, that he has given you one hint that you start believing in yourself and start working towards what do you think suits you, and then success will automatically come to you. Yes, sir, as you rightly said, when an egg gets a pressure from outside, eventually it breaks of one life. But if the same gets a pressure from inside, eventually when it opens up, it's a bringing in new life. So you should also start believing in your. We will guide you the way, not as beautifully as sir has done, but we will guide you in the path of dreams. Ultimately, gathering energy and making yourself successful lies in your own hands. So thank you very much, sir, for that beautiful insight that you gave us. Usha madam, you have always been splendidly superb. So thank you for gracing this occasion and being with us in the morning. All my teacher colleagues from IT, CS and Data Science Department, thank you very much for this wonderful opportunity. And I think this program would not have been possible without all these smiling faces with dreams in their eyes and determination to succeed. Love you all. Make best use of the institute and go ahead in your career. Thank you very much for this. Thank you. Thank you. Just one thing. I have a friend and colleague who was chief data scientist of IBM. He stays in Pune. He's IIT Mumbai. He just retired from IBM a few months back. His name is Dr. Sanjeev Kumar. So if you all have any specific, if you want, I can maybe sometime request him to come 1 hour or 2 hour of data science lecture to this team. आपको data science related और भी कुछ doubts वगैरह है तो he'll be happy to help. Maybe somebody can coordinate with him. Whenever he's in Bombay, yes, he stays in Pune, but he comes to Mumbai once in a while. We meet. So yeah, I will ask him to come and maybe deliver a 2 hour lecture for you all on data science and AI. He has 4 patents on his name on data. Yeah. So he's a very, I mean, super cat. We used to call him super cat on data. So he's just retired. Abhi 4 mahine ho gaye. So his name is Dr. Sanjeev Kumar. He's also on LinkedIn. So if you reach out to him, I'm sure he'll help you. But अगर आप लोग के कोर्स में रिलेटेड कोई आपको कोर्स के लिए कुछ डाउट सॉल्विंग या मोस्ट डिफिकल्ट कुछ भी हो डेटा और एआई में, I can ask Sanjeev to come and spend some time with him. He'll be happy to help. Thank you, sir. Thank you.